Okay, let's start the class. It's already 6:04. So I think most of you who have been joining my classes or sessions will already know that we have completed all the new pranayams that we have learned, the 6 pranayams, and also we learned the different kind of meditation practice. Sorry, it's raining a lot today, so there will be a lot of background sound today. I'm from Bangalore, and Bangalore it's raining heavily. So just let me know in case you see that I'm not very audible, then do let me know. Okay? In between you can tell me by giving thumbs down, or you can chat on the window to let me know. Okay? Okay, so I think the first session I spoke about how to sit in a meditation practice or in a pranayam practice, and details about how to sit, how to start your practice, how your breath should be before you start the practice. I will just quickly revisit them because couple of you were not present in first class when I spoke about these details. So we will quickly brush up and then start with our pranayam practice, which is Anulom Vilom, Bhrastika and or Kapalbhati and Bhramri. So we will do these 3 back to back, and then we will go to our meditation with respect to breath, which we did it in our first class. So we will do the same meditation today. Okay, so let me just brush up. So you can sit in any comfortable posture. You can sit on chair, you can sit on stool, you can take support of a wall if needed. You can sit on a cushion, little your backbone lift up and then sit it normally. You can sit in cross leg, Vajrasana or Ardha Padmasana or Siddhasana or Ardha Siddhasana, whichever posture is easy for you. Always make sure before you start your pranayam, अपने प्राणायाम को शुरू करने से पहले always make sure your nostrils are open. आपकी दोनों नासिकाएं ओपन हैं, एकदम खुली हुई हैं. अगर बंद रहेंगी तो प्राणायाम का असर आपको उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा. So if your nostrils are closed, your pranayam benefits you won't get it as much as possible, right? So how you should do it and what you should do it to make sure your nostrils are open. You can do a steam, you can clean with little bit of water, dip your nose, little inhale and then make sure your nose are clear. You can also do a cardio if you are healthy and you have no issues. You can do on spot running to make sure your nostrils are open. You can always do Surya Namaskar just to warm up your body to make sure it is clean. You can do Shushma Vyayam, which is your neck Vyayam, shoulder Vyayam, a small and easy Shushma Vyayam before you start your pranayam. I will go through Shushma Vyayam in another session, 1 or 2 sessions after this class, to make sure that a normal Shushma Vyayam that you can do it while sitting and not doing too much of cardio related Shushma Vyayam. Shushma Vyayam is only to stretch your body parts. Okay, so we will go through that in later of the sessions. So that is what you have to do it before you start your pranayam. So make sure आपकी नाक दोनों ओपन है, और वो किसी भी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं. भाप लेके कर सकते हैं, पानी को डुबो के क्लीन करके कर सकते हैं, या थोड़ा सा एक ही जगह दौड़ें, खड़े होकर ही पैरों को ऊपर नीचे कीजिए तो आपकी नाक खुल जाएंगी. या तो सूर्य नमस्कार के 1 या 2 अगर आप हेल्दी हैं एंड आप कर सकते हैं तो उसको करने के बाद प्राणायाम पे बैठ सकते हैं जहाँ पे आपकी दोनों नासिकाएं ओपन है. ठीक है, साफ सुथरी हैं और दोनों नाक से आप सांस ले पा रहे हैं दोनों नॉस्ट्रिल से. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है.
So we will move to the first pranayam which we have learned is called Anulom Vilom Pranayam, which is alternate nostril breathing. So आप हर बार जितनी बार आप एक नाक से सांस लेंगे आप शिफ्ट करेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे और फिर लेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे. तो जितनी बार भी सांस अंदर लेंगे आप चेंज करेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे और फिर लेंगे. So what you have to do is you have to place your right hand. Now there are different ways and mudras that you can take to close your nostril. You can close with your thumb and little finger or ring finger or middle finger. You can choose whatever finger you want to close your left nostril. The other fingers can be in or placed on top of your Bindu Chakra. I like to use my ring finger and thumb for my practice. So you can always use your ring finger जो तीसरी उंगली है और या तो आपका जो thumb है और उन दोनों को आप यूज़ करेंगे. Now whenever you start your practice, make sure to start with बाएं से सांस को अंदर लेंगे, क्लोज करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से अंदर लेंगे, क्लोज करके बाएं से छोड़ेंगे. Now I will shift to English. You are going to breathe in from your left, switch, breathe out from your right, closing your left nostril, breathe in from your right, close your right, exhale from your left. यह आपकी एक राउंड है. This is your one round. You will keep on repeating this. You can do this for 5 minutes. So continue your practice. जितना लंबा ले सकते हो उतना लंबा लेके दूसरी तरफ से छोड़िए, दूसरी तरफ से लीजिए और बाएं से छोड़िए. Keep going. Keep going, keep doing this practice of with every inhale, make sure to switch your nostril, exhale from that, inhale from the same nostril, switch, exhale. Keep continuing, I will let you know when to stop the practice. So keep continuing your Anulom Vilom. People who are little advanced practitioner, you can also retain breath, which is called Nadi Shodhana. Nadi Shodhana will have inhale, you will inhale from your left. Hold the breath by closing both the nostrils, hold. And as you leave from your right, inhale from your right. Hold the breath. Exhale from your left. Only if you are healthy people, you can retain, hold the breath into your body. You don't have any illness. Please continue with Nadi Shodhan. Otherwise, keep continuing Anulom Vilom. Don't retain your breath. अपनी सांस नहीं रोकनी है. अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है या आपको सांस लेने में ऑलरेडी प्रॉब्लम है या आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है, आप प्लीज़ होल्ड वाली प्रैक्टिस ना कीजिए. कंटिन्यू प्रैक्टिस विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. अनुलोम विलोम डायरेक्टली, नॉट नाड़ी शोधना. अदर पीपल कैन डू नाड़ी शोधन.
It's a very good practice to bring balance in your body. So wherever there is little less or more, your body will try to find that the energy is distributed equally to each part of your body. So make sure to do this Anulom Vilom every day for 5 minutes. You can extend this practice till 15 minutes in a day. Okay, so you can do either morning 5 minutes and evening 5 minutes, or you can choose to stay with 5 minutes for little longer, and as you graduate, you can increase it to 15 minutes. Whenever you end the practice, please end your practice with exhaling from your left nostril. Always अपनी जब भी आपको नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम को खत्म करना है, उसे आप बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ते हुए खत्म कीजिए. Okay, let's move to Kapalbhati practice. Kapalbhati में your focus should be fully on exhales. Inhale will be automatic. Okay, so there has to be no force or knowledge about inhales. Now ये प्रैक्टिस आप धीरे भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, जोर से भी कर सकते हैं, धीमे से भी कर सकते हैं. You can do this practice as per your body need. You can do it fast, you can do it slow, you can do it deep, you can do it little smaller beats. It's your own practice. Make sure when you are exhaling, आप सांसों को जब बाहर छोड़ते हैं तो आपकी स्टमक अंदर जाती है, ना बल्कि बाहर आती है. ये बहुत ज़रूरी है. तो इसे हमेशा याद रखिए. Whenever you are exhaling, your stomach goes in and it does not come out. Okay? So this is how you are going to do. ना इसे आप जल्दी भी कर सकते हैं और धीमे भी कर सकते हैं. यू कैन डू इट फास्ट. कोशिश कीजिए कि शोल्डर ऊपर ना करें. कोशिश कीजिए नाक सुखड़े नहीं और फेस भी बनाए नहीं जब आप कर रहे हैं ये प्रैक्टिस. ये बहुत माइल्ड, इट शुड बी एन ईजी प्रैक्टिस फॉर यू. So don't use your chest or upper body movement for Kapalbhati. Kapalbhati can be done minimum 11 in one round. You can extend that one round to 121 counts in one round, single round. Otherwise, if you cannot do it in one round, make 11 ka sets. So do one round of 11, one round of 11, one round of 11. Take break in between whenever it is needed. Okay? So let's start continuous. 150. Keep continuing. I will keep talking about how helpful this pranayam is. So आप करते रहिए. मैं इसके कुछ अच्छे परिणाम आपको बताना चाहती हूँ. ये ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसा प्राणायाम है जिसमें आपकी कैलोरी बर्न सबसे ज़्यादा होती है. तो इफ़ यू रियली वांट टू लूज वेट अराउंड योर बेली, इट्स दी प्राणायाम दैट यू शुड डू इट. बट इफ़ यू हैव वीकर बैक,
अगर आपकी बैक वीक है, ऑलरेडी दर्द होता है, तो आई वुड से रिस्ट्रिक्ट योर कपालभाति टू लिटिल स्मॉलर लिमिट्स. डोंट डू इट अ बिग राउंड ऑफ कपालभाति. तो छोटे छोटे राउंड्स में कीजिए अगर आपकी पीठ में दर्द होता है. अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कुछ आसन है हमारे जो हम आपको सिखा सकते हैं, जैसे कैट एंड काउ है, ये कर सकते हैं आप. दीवार के बल अपनी पीठ को रख के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ वॉल while doing Kapalbhati, or do Kapalbhati with little less force. So कम फोर्स लगाते हुए इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं. ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन हाउ योर बॉडी फील्स. तो आप उसी तरह का प्राणायाम कीजिए जो आपको अच्छा लगे. अगर आपको तकलीफ देता है तो करने की ज़रूरत नहीं है, उसे उतना ही स्लो और कम मात्रा में करने की कोशिश कीजिए. तो जितने काउंट कम कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है. आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो ऑन म्यूट सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस प्लीज. ओके. Beautiful, very nice, Nayana. Very nice, auntie. Okay, let's move to our third pranayam, which is Bhramari pranayam. भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छी प्राणायाम है, खासकर कोरोना टाइम के लिए, जहाँ पे छाती को जितना तंदुरुस्त बना सकते हैं उतना ही अच्छा है. तो भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम साउंड जो है, जो मैंने आपको सिखाया था ओम प्रैक्टिस कैसे करते हैं लास्ट क्लास में, उसमें जो है वो साउंड आपकी थ्रोट से निकलती है, जिससे वाइब्रेशन आपके पूरे फेस में और छाती में आता है. सो भ्रामरी प्राणायाम इज फोकस ऑन साउंड दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम योर थ्रोट, from your pit of your throat. A very nice and beautiful pranayam where you close your ears by mild pressure with your thumb. You keep your eyes closed with your middle finger, a mild touch. Don't press a lot. Your index finger on forehead, your middle finger on your eyes, and your ring finger and little finger on your cheeks resting easily. And closing your thumb. So do it when I am done with the instruction. Okay. So what you do, you take a deep inhale through your nostril, you close your ears and eyes, and while exhaling from your nostril, you make humming sound. जितना लंबा छोड़ेंगे उतना लंबा ये का सांस बनाएंगे. तो मैं एक बार करके बताती हूँ, एंड देन वी ऑल कैन डू इट ourselves, and minimum we will do it for 7 counts. Okay, so let's see first and then do it ourselves. We will take both our palms towards our face, close our indriya or the senses, and take a deep breath in. Now idea is to make it as long as possible, as smooth exhale as possible. So keep going guys, everyone do your 7 rounds of Bhramari Pranayam.
Very nice. Let's move on to our meditation practice. अगर आप चश्मा पहनते हैं तो प्लीज़ अपना चश्मा उतार दीजिए. मेडिटेशन में आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी. Make sure when you're doing meditation, you're sitting in a place where there's not too much of light on your face. There's not too much of sound around your sitting place. Now always make sure not to move a lot when you're doing your meditation. तो बहुत ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है. अगर हिलना डुलना है तो भी ऐसा कीजिए कि जैसे आपको खुजली हो रही है तो बहुत स्लोली हाथ उठाइए, खुजली कीजिए and then take it down. If you really want to itch a part of a body, make sure your movement is as slow as possible and then you do the things and then come down. Okay? So very important not to move a lot, not to disturb the focus. ध्यान जो लगाया है उससे भ्रमित नहीं होना है, उसे कंटिन्यू रखना है. And we will do it for 15 minutes. You will focus only on my voice. You will listen to my instructions. You don't have to see me at all. So make sure you're sitting comfortably in a posture that is comfortable to you. Closing your eyes. Face relaxed, elbows relaxed, shoulders relaxed, surrendering yourself to your mat or your chair on which you're sitting. Make sure you have a gentle smile on your face. Whenever you are doing your meditation, you always start with a smiling face. Not laughing, but a smiling face. Now let's connect with our body first. Take a moment to just assess our body, how our body feels right now. Is it tired or is it energized? Is it calm or is it full of anxiety or stress? Is there any aches and pains in the body? Just go through your whole body, how your body feels right now. Take a note of it, and when you're done with your meditation,
Go through again, assess your body once again after the meditation, dhyana practice, and see if it has vanished. Those aches and pains in your body has vanished, or the stress in your body goes away after the practice. So keep a note of it. Now slowly taking your awareness towards your nostril. And I want you to put your whole focus towards your nose, the entrance of your nose. Make sure you see how your breath goes in and out of your nostril. Focus on your entrance of nostril. Not a single breath goes unnoticed. Idea is not to change your breath. The natural breath going in and out of your body, let it be as it is. Just focus on the entrance, how you feel as your breath goes in, and how you feel as your breath goes out or comes out. अपना पूरा ध्यान अपनी नासिकाओं पर लगा दें, अपने नाक के द्वारों पर लगा लें। अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए देखिए। दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि एक भी सांस मेरे बिना जाने ना अंदर आ पाएगी ना जा पाएगी। एक द्वार के समान दृढ़ होकर अपनी नासिकाओं में लगा दें अपना ध्यान। सांसों को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए अपने द्वारों पर, और जैसे सांस निकलती है तो आपको कैसा लगता है? आपके नाक के द्वारों पे, नासिकाओं पर आपको क्या लग रहा है? उस पे पूरा ध्यान लगा दीजिए। Your breath can be deep. Your breath can be short. Your breath can be warm. Your breath can be cold. Nothing is wrong or right. Everything is okay. Just keep that awareness fixed on the entrance of your nose. Become a gatekeeper. Become a watchman on the entrance of your nose. Make sure not a single breath gets unnoticed. सांसें लंबी हो सकती हैं, सांसें छोटी हो सकती हैं, सांसें गर्म हो सकती हैं या सरद ठंडी हो सकती हैं। कुछ भी गलत या सही नहीं है, सब ठीक है। बस उन्हें महसूस कीजिए, उन पे अपना ध्यान पूरा लगा के रखिए। नाक के द्वारों पर दृढ़ निश्चय करके बैठ जाइए, अपना ध्यान रखिए, और एक भी सांस आपके बिना पूछे या बिना महसूस किए ना अंदर जाए ना बाहर आए। Your mind might wander here and there, which is okay. Don't be harsh on yourself. It's
It's okay for your mind to go here and there. Whenever it goes somewhere else, bring your awareness back to your nostrils. आपका मन भ्रमित हो सकता है, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। उसका काम ही है इधर से उधर जाना। पर जब भी इधर उधर जाए, उसे वापस अपनी सांसों पे ले आए। फिर से मन को अपनी सांसों पर वापस लेके आके फिर से महसूस करना शुरू कर दीजिए। Make sure your focus is mild and gentle. We do not want to create pains and aches in our body by focusing hard. We do not want to have headache. So make it as mild and easy practice for you so that you can stretch this 15 minutes practice to 21 and eventually 45 to 1 hour. ध्यान रखें कि जो आप ध्यान लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं पैदा करे शरीर में, बल्कि उतना ही इजी रहे, सरल रहे आपके लिए जितना कि कोई भी दिनचर्या की क्रियाएं होती हैं। जितना डिफ़िकल्ट या मुश्किल इस प्रैक्टिस को बनाएंगे उतना ही ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान सरल और सीधा और इजी होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए, ताकि इस ध्यान की क्रिया या मेडिटेशन को आप लंबे समय तक कर सकें। 15 मिनट से 21 मिनट तक, 21 से 35, 40 से लेकर 1 घंटा तक। Keep mild and easy
easy focus on your breath. Don't try to change your breath. Let it be as natural breath as possible. Slowly, I want you all to take your awareness to outside world. Let's hear different sounds that you can hear currently. Make sure you don't stick to one sound for a longer period of time. Move from one sound to another, to another, to another. अब अपना ध्यान बाहर की दुनिया में लेके आते हैं और डिफरेंट आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं। एक आवाज़ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बार बार एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की तरफ अपना ध्यान डालेंगे, फिर तीसरी आवाज़ पर। इस तरह हम आवाज़ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, एक आवाज़ पर नहीं रुकेंगे। We'll keep moving from one sound to another. Let's give ourselves 1 minute to hear different sounds around you. It can be fan sound, it can be rain sound, it can be vehicle sound, kids sound, cooker, utensils, any kind of sound that you hear. Slowly taking awareness towards your body again. With mild movement of your toes and fingers, connect with your body.
Slowly taking your palms towards the center of heart in Namaste. We'll end today's practice by chanting Asato Ma Sadgamaya, followed by Om Shanti Shanti Shanti. With next deep inhale, Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Open your palms, open your eyes, look into your palms. Thank you. Have a nice day. Take care. Stay fit. Stay healthy. See you all on Monday with our again pranayam and meditation practice. If anyone has any question, they can stay back. Otherwise, we will leave the meeting. Thank you all. Have a nice weekend.